Friends of media, ladies and gentlemen, a very, very good evening to you on the back of Barcode. Uh, it's a pleasure for us to bring in our third original series to consumers. If you look at the overall journey over the last 3 to 4 months that we've been rolling out programs, we have gone out and told varied stories. And if you see the story and the narrative that both Vignesh and Abhishek have put together, this is another one which is extremely different. And we would believe that this kind of storytelling, this kind of narrative is something that Indian consumers and consumers out of South Asia have not necessarily seen. And we're extremely excited and happy to look at bringing something like this to Indian screens. In terms of the overall opportunity, because Hungama reaches out to 53 million consumers, both in India as well as South Asian audiences outside, we've gone about taking our originals and we've looked at various kinds of genres. We've gone out and built products across genres. You've seen a product that came in, which was our first, which was from crime. Then we did the Underbelly, which was Hankar, which was more drama. Now this drama series, which is Barcode, goes into extremely urban, uberish kind of a setting, and we believe the kind of stories that we're going to tell through Barcode is going to be extremely different and interesting to our users. You will also see us bringing in comedy, which is going to be the next release, and we're looking at regional in a big way to bring that out to users as well. In terms of the overall consumer mix, because we cater to such large communities, we've gone out and build storytelling and narratives addressing smaller communities in question, being able to understand what is the kind of content that that consumer consumes, and then being able to target to that base. And that's something that we have gone out and we've attempted, and we've seen consumers successfully consume Hungama's entertainment through the original space as well. To just give you a specific number, we've had roughly about 48 million episodic views of our two previous series that have happened over the last 3 to 4 months. And we are extremely committed, and we believe Barcode is going to be another path-breaking product from Hungama, which we're going to put out there. And we're really looking eagerly for consumers to give us feedback on this offering. Thank you. Thank you so much. I think there is a very important person who is not with us over here right now, but we do have a message. Firstly, congratulations to all of you. Everything about Barcode looks so exciting, from the poster to the trailer, and I'm sure everything else that we're going to witness on Hungama Play as well. But Sanjeev, starting off with you, right now, everything that we are seeing is already so polished, it's so exciting, and we know that there is something really, really, really amazing out there. But when you saw the raw product, what is it that you really liked about it, and what is it that got you hooked onto it? First of all, thank you all for being here. This has been a journey of over a year. Actually, it started with Abhishek's dad, Kumarji, and I had occasion to work earlier, and I knew that he was looking at doing a digital series, and I approached them. And I still remember Abhishek and Vignesh, we met at Starbucks in Juhu, and we had a long chat about this show that they wanted to do. And there were things that I instantly liked about it. First of all, it was a kind of story that had not been told in the digital sort of area earlier.
the uber rich nightclub, nightlife, friends, drama combined with the setting of running a nightclub, Russian girls, drugs, police, and everything like that. So that was very very interesting. But more specifically, I have great respect for Abhishek's producing chops. He's made some wonderful movies. And I knew that he would bring a lot of production passion. And most importantly, I think Vignesh had been living with this story. And he knew how to tell it. He knew that for the people who actually go to the nightclubs, it had to feel natural and good. And for the people who don't go to nightclubs, it had to feel like a wonderful world. And that balance is sometimes tricky. But he knew how to tell this story. And as the story came together and as the wonderful cast came together, I think it was one of the easiest decisions to be able to go out and say, let's go and make this. And that is how we got Barcode. How long have you lived with this? Because you've written it and you've directed it. How long have you lived with Barcode? How many years? I'll be honest with you. I have been clubbing for the longest time. You know, so Knew that's that. probably 22 years, 20 years since I made Barcode. So for me, it's very organic. I think, You wrote I've- the first draft on the tissue paper of a nightclub. sorry, come again? You wrote the first. I might have. I have no recollection of that, but I might have. So for me, this has been the world. What you're seeing in the trailer has been part of my life for 20 years. So this is a world I know very well. It comes very organic for me. So I do this every Saturday, even till today. So for me, it was just organic, and it just all came together. The stories came from there. I have friends in the nightclub business. I've known a lot of people from this world. So it all just came together well. Thank you so much. How was it for you to enter the whole web series thing? We all know that you've been a part of such amazing films. You've given us all such amazing blockbusters. But to enter the web series zone, how was it? And why do you think is it viable? I think entering a web space for any other format will make or to tell a story is not actually called. It's a progression of cinema. And when he came with Barcode idea, I think it was a great story to tell. So, and it was a little different than what we normally make in films. Little experimental, little upbeat, little something which people are not ready to watch. So we chose like let's make it, and obviously great writing, and finally audience changing themselves to watch web shows. People at their own convenience can sit and watch something they like. So it was called that we took and we got made this show, Roy. That I love this whole this change that has come into our society. I remember every time I came back home, I would see my mother hooked onto the television, waiting for another episode. But now she is actually the person who waits for all of these web series, and she's the one who enjoys it way more than I do, on her own convenience, playing it as and when she wants. So I am totally in love with this change. What do you think about the change that web series have brought and the kind of excitement that audiences have been showing for web series? So actually, Vidya, the first and foremost is the medium itself. I think the medium lends to all of this. Television is a one-to-many. There's content that's being made for a certain set of audiences, and that tends to be of a specific type of content being made available. I believe with the digital space, the big change is that it's a one-to-one. I mean, today as a consumer, I pick and choose the genre and the kind of content I want to consume. And I think that is one of the biggest liberation that's happened, where today there's content that's being made for various sets of consumers and communities and various genres of content. And in that, that's also the reason why for Hungama, it's not about only doing drama, only doing crime, only doing comedy. It's about great stories and great narratives. And here, I believe what we're putting out through Barcode to the user, we sincerely, as a team, have put in that effort to go out and put together a product that we genuinely believe there will be a set of consumers that will want to come and consume this for the storytelling and the narrative that's being put out to them. Actually, there's something that I have noticed with all the Hungama originals that I've seen on Hungama Play, be it Damaged, be it Hungar, be it Barcode now.
everywhere you can see that gray shade of human nature, and that is something that I personally have. And that's why I would like to see it in everything that I see. So that is something that is constant with all the Hungama originals. So guys, without wasting any more time, do we want to call the Starcast? So let's call the Starcast on stage. People who need no introduction. Karan Wahi, Akshay Oberoi, Pareena. All right, so Karan, starting off with you. You know, I need to tell you something. They say that, your first impression of a person is actually your last impression. And I remember him from the remix days. And he was this really good boy over there amidst all the bad people. And then you see him doing all these roles of grey shade. And every time I see a trailer where Karan Wahi does a role of grey shade, I tell myself, acha ladka bigad gaya bichara. I still have that good boy image. What is, does this happen to you very often? I was told women dig bad boys, so I just became one. I'm just glad I'm not the anchor tonight. But Yeah, we see him doing that Yeah. even more often. I was actually, wondering. I was like, do they have an anchor or should I only go today? But yeah, it's fun. I think it's always fun to work on different things that you keep, evaluating yourself. For the longest time, I wanted to do something negative or grey, and everyone used to tell me that, "अरे तू इतना cute सा बच्चा है, Exactly. तो तुझ पे suit नहीं करेगा." And unfortunately, what happens is a lot of times the way you look, especially in our country, people perceive you for characters in that way only. So I'm glad that people are actually seeing the bad boy in me. Gives me more opportunities and gives me more variations in the kind of work I do. I mean, seriously, look at him over there. Look at the forehead, the Do I frown look like over a bad there. boy there? You do look like a very, I very think I bad look boy. sexy. Pareena. So, firstly, how was your experience working with the man behind you, Vignesh? 20 years in a nightclub, he knew every single thing the way it's supposed to. How finicky was he with everything? Say good things, he'll edit you. It's Guys. still not on. Like my co-actors know like what we're gonna say about our director. Like we all have discussed for so long that we've been talking about, how good he is with his own product. For him, it's a baby, right? Barcode is something very close to him. And he cannot at any point do anything wrong, be it any character, be it Karan, Simran, Akshay, mine, anybody, or be it other characters also. He's worked so hard with me, and whereas there was a lot of workshops taken before this series was started, and I know like one sentence also I'll say, and sir would be like, no, Pareena, we can do this in a better way. And I'm like, yes, we can, and I'm a new artist. So, and he's worked really hard with me, especially. For him and I, especially in the show, it's the first thing. For me, coming here and doing this also feels very special. And I'm very happy to be part of Barcode. And yeah. And I'm sure it's gonna, your entire tenure and every single thing is gonna go a very, very long way because it is Barcode, something that is so exciting and something that already looks so amazing. Yes. Akshay, you have had a legacy of such amazing films and then web series, and there are so many projects that are coming up as far as your career is concerned. In this entire pool of projects and everything, web series, what does that give to you? What is that for you? Well, I think this web space is a very exciting space for everyone because a lot of young actors and directors, writers are getting a platform that they perhaps would not have gotten before. I think a talent like Vignesh Shetty getting to do a web series I'm sure Vignesh will be making several feature films for you guys to all see soon. Maybe Abhishek Pathak will be part of them because he's a very talented guy. But to get a leg up, to get that platform, to see like, his "That's work, obvious." to see his work shine, this web series space is a great space.
And as far as what it means to me is that it gives you it's a way to explore, because a lot of what I like to do, I'm not really ever chasing stardom, to be really honest with you. That's not something I ever set out to do. I always wanted to be the best possible actor I could be. And sometimes in films, you get kind of pigeonholed into certain characters and playing something a certain way. And directors also want it in a certain way. In the web space, there is much more creative freedom. So there's room to experiment, there are room to try things. Language is not a concern. Nobody comes to you and says, "Arey yaar, Hindi mein bolo, ya Angrezi mein bolo." It's much more open. And you can do many things that perhaps somebody would be like, "Nahi yaar, hamari audience isko pasand nahi karegi." Like what if I played it this way? Nahi, ye zyada subtle ho gaya, logon ko samajh mein nahi aayega. So those restrictions are no longer there in this space. And I think that the future of Bollywood, or our Hindi film industry, or Hindi industry in general, looks a lot more promising to me when you have young talents like Vignesh Shetty and other people who are making web series coming out and doing it by the numbers. Because now it'll be merit. It'll be the people who are actually good at their job and know their craft that get that next bump up. Right. Simran, how was it working with the three present over here? How was it? What was the on-set chemistry with all of them like? So Vahi, I knew from before, and Akshay and Parina, however, I've met on set. And I think we all share a very good working relationship. And during this process of working together, we've also formed a very good bond of friendship. And I wanted to add one thing, especially for Vahi, because Akshay, we've seen him act before in several films, and we know, like the kind of roles that he does. But Vahi, however, like you mentioned, is in this very cute chocolate boy image, and breaking that barrier and actually being able to do this role and play Vicky to and give complete justice. I think hats off to him. He's done a brilliant job at it, and it's I think a give and take. Like for me, especially. So I had most of my scenes, coming to Akshay, most of my scenes were with Akshay. And I believe as an actor, he gave me enough for me to respond to him. Because if you have a good actor that you work with, and if that comfort and that thing is there, and somewhere I do believe that my performance in this has really improved because of Akshay and the way he gave me the dialogues and the way I reacted to them. So it's been a great experience overall, and the most special mention I want to give is to our director Vignesh Shetty. I cannot. He's the toughest taskmaster. He's just brilliant. I mean, it was amazing working with him, and if you work with him once, you will know exactly what we've gone through, and I do wish you work with all of you. I think I'm just going to interrupt for 1 second. The trailer you guys just watched, there's a small voiceover of mine in the start of it, which may be, 40 seconds? And I did 44 takes of that in the dubbing studio until the man was in, like, I would be like, "Arey, ho gaya yaar, phad diya maine." And I'd walk out of this dubbing studio, he'd look at me and say, "Actually, I feel that one word. Now, can we do it one more time?" So I was like, okay. And with him, you can't argue. And I don't want to get into a space where I'm arguing with him, because he knows what he wants and he's right. So I would go back in. And when I left, I checked, how many takes did I do? It's 44 takes. Either that means I'm awful, or it means like he's insane. And he is too good. He's crazy. I think we should definitely not go by face value, because just look at him. Bhola bhala chehra. 44 takes. All of them are lying, right? I should go by the face value. Are you That's sure what you we all want to did. We release went it by face today? value. No, Hola we should lag raha hai. ask him. We should ask him, are you sure you want to release it today, or there's some edit You want to left? wait? You want to pull it off the platform? You want to do grading again? No, we are all set no matter what you guys say. अच्छा, usually जब कोई film की shooting होती है, जब कोई web series की shooting होती है, it's either on the streets of Mumbai, you're going to the slums, or you're going on this, on the road, talking to people. Over here, the scene is completely, it's sober firstly, it's sober. And you are in the nightclubs. So how, did you guys ever try to calculate the hours spent in a nightclub just for this web series? Like, how often did you guys actually go to nightclubs? And was your workshop in the nightclub? No. It was in the Panoramas. I think a couple of us grew up in a generation when nightclubs were very popular. And I'm speaking for some people here. I'm mostly Wahi, because I feel like we have a similar sort of, he was in Delhi, I was in Bombay. But I think that
people of this generation have seen a lot of nightclubs. I don't think that was a necessary part of it because वो हमने देखा है already. So that's just what I feel. I don't know if you guys. So I'm going to open the platform for media Q&A. If anybody has a question, please ask for the mic and go ahead. हेलो हेलो मेरा सवाल करण से हाय करण हाय रहमान फ्रॉम ANI हाय रहमान पर्सनली आपका क्या थॉट्स है डिजिटल को लेके और कितना ग्रो कर रहा है और हमने सुना कि आगे भी आपकी वेब सीरीज है हंगामा के साथ उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए क्या बात कर रहे हो यार You didn't tell me नहीं but thank you रहमान well यार मैं प्राइमरीली एक टीवी बैकग्राउंड से आता हूँ मैंने बहुत टेलीविज़न किया है लाइफ में और यू नो पहले एक टेलीविज़न होता था और फिल्म्स होती थी बीच में कुछ नहीं होता था एंड आई एम सो ग्लैड कि द वेब स्पेस हैज़ एक्चुअली गिवन सो मेनी एक्टर्स इफ़ आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ मैं अगर अपने लिए बोलूँ तो द पोटेंशियल एंड द चांस टू डू सो मच मोर इतना कुछ हम जब टीवी में होते हैं हम यू नो आई एम नॉट गोना डीमेरिट इट बट हम हमेशा टेलीविज़न एक्टर्स के मुंह से सुनते हैं कि यार कंटेंट इतना कमाल नहीं है हम काम करते हैं करने के लिए तो जब वेब स्पेस बड़ा हो रहा था या यू नो वी स्टार्टेड आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ बैक एक 1.5 साल पहले हमने बारकोड शुरू किया था तब वेब इतना ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हुआ नहीं था मासी तो आई थिंक एक प्लेटफॉर्म मिलता है अच्छा काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जैसे अक्षय ने कहा कि कोई इश्यूज नहीं होते लैंग्वेज के कि आपको हिंदी में ही बात करनी है या इंग्लिश में ही बात करनी है या एक तरीका होता है जिससे हम बात करते हैं वो फ्रीडम मिलता है एंड आई थिंक फॉर एन एक्टर दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट बिकॉज you're just going to be a complete actor if you try and do things you know which are different and if you try to evolve with the things that are happening so I think मुझे I'm really glad and I'm grateful कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और I hope आपकी बात सच हो जाए हंगामा सुन रहे हो तो प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट भेज देना and I hope I keep doing good stuff and I keep entertaining people जैसे भी आपने कहा कि कंटेंट ही किंग है वेब सीरीज को लेकर कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि वेब सीरीज में अनसेंसर कंटेंट होते हैं सेंसर नहीं होता है लेकिन कहीं ना कहीं न्यूडिटी दिखाने से व्यूअर्स और फैंस को भी डिसअपॉइंटेड होता है सर वो डिपेंड करता है मतलब डिपेंड्स ऑन शो टू शो मैं अगर पर्सनली ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है कि न्यूडिटी जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है बिकॉज अगर मैं अपने आप को एक एक्टर बोलता हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए इफ़ आई बिलीव इन द थॉट प्रोसेस अगर मैं बिलीव करता हूँ कि मैं स्मोक कर सकता हूँ ऑन कैमरा क्योंकि मेरे कैरेक्टर को स्मोकिंग दिखानी है या करनी चाहिए तो आई थिंक व्हेन दैट न्यूडिटी क्लॉज स्पेशली कम्स इन इंडिया वी ओवर थिंक इट बट पर्सन टू पर्सन है मेरा पर्सनली मानना ये है कि till the time it's not just for the heck of it it's good yes there are a lot of content out there जो primarily focus उस पे करते हैं but वो उनका you know thought process है उस पे मैं ना तो रोक टोक कर सकता हूँ ना मैं कुछ comment करना चाहूँगा अब अपने फ्रेंड ऋत्विक की वेब सीरीज XXX अल्ट बालाजी की वो देखी है आपने मैंने यार बालाजी की XXX देखी नहीं है बट वो अगर एक शो का नाम ही XXX है so I think you already know what they're trying to sell. अब मैं जब वो शो देखूंगा तो मैं कमेंट कर पाऊंगा कि वो कितना जायज़ है और कितना नहीं है. Thank you so much. That's it. Can you please play the trailer again? Of course we can. Can we Yeah, play the can we trailer like again? please see the trailer? काफी different question था वो. Yeah. Can you come on all our press conference? Yeah, we'll Everywhere we invite go. you to every press conference. That title, it's just. Thank अगर you. मेरा नाइट क्लब होता ना उसका नाम बारकोड होता पता है. It's really nice. So we're going to move towards the photo op. I request
our entire crew to kindly be ready. We'll move towards the photo op. If anybody wants to ask a question, we are actually going to go towards the media interaction, so we're going to open the stage for photo op, right? Before we leave, I would like to call. Who made this possible for me, my HODs, my editors, my sound designer, my background music composer, my casting directors, my VFX supervisor. All these guys over the last 2 years worked day in, day out to make this happen. Production, my team, Sanjeev Joshi, Pragya, all of these guys who were with me as a pillar of strength for the last 1.5 years, and I thank you so much for all of that. I just request all my HODs, Arjun, Mahir, Vicky Sidana, Apurva, Josh, all of you guys, Ashwat, Ishan, all of you guys to please come on stage, please. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कन्वर्सेशन में। Thank you. कब से ये प्लानिंग कब से चल रही थी बारकोड वेब सीरीज से जुड़ने की, और थोड़ा इस वेब सीरीज के बारे में बताइए। यार बारकोड तकरीबन मुझे इट्स बीन लाइक अराउंड 2 साल हो गए हैं मुझे, एटलीस्ट 2 लाइक आई मेट विघ्नेश अराउंड 2.5 years बैक। मैं ऐसी ही मीटिंग के लिए गया था कुछ। अभिषेक हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे दोस्त हैं, तो मैं अभिषेक से बात कर रहा था उस टाइम पे कि अभिषेक वाज लाइक क्या कर रहा है तू, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ एंड वर्क वाइज। आई वाज लाइक आई एम जस्ट फिगरिंग आउट अच्छा काम देख रहे हैं क्या है। सो ही सेड जस्ट कम, आई हैव समथिंग फॉर यू, आई डोंट नो इफ यू वांट टू डू इट बिकॉज इट्स फॉर द वेब, बट आप आइए, आप मेरे डायरेक्टर से मिल लो एक बार। सो आई जस्ट वेंट, मैं गया विघ्नेश से मिलने एंड आई जस्ट वेंट इन माई नॉर्मल घर का क्लोथ्स। लाइक मुझे था कि शायद मुझे सिर्फ मिलने के लिए बुलाया, मैं चला जाता हूँ। And the kind of clothes that I was wearing and the kind of mood probably मैं जिस mood में था उस टाइम पे,
actually told I was told later on by Vignesh कि he gave me the show because of that, because that's the kind of things जो मेरा character विकी है वो show में है. तो जब मैं बाकोड से जुड़ा था तो मैं उस टाइम पे एक्चुअली आई वाजंट डूइंग मच एक्टिंग वाइज. मैं बहुत एंकरिंग कर रहा था टेलीविज़न पे, तो मेरे पास एक्टिंग का स्कोप था, टाइम था मेरे पास एक्टिंग को देने का. जब मैं बाकोड शूट कर रहा था, बिकॉज बाकोड हैज़ बीन शॉट एक्सटेंसिवली, यू नो बहुत टाइम में हम ब्रेक्स में शूट कर रहे थे क्योंकि सबकी डेट्स मैनेज करनी थी. आई वॉज डूइंग सो मैनी थिंग्स टुगेदर. तो मैंने मैंने अभी किसी को इंटरव्यू में वही बोला कि एक सिमिलैरिटी जो मेरे और मेरे कैरेक्टर में जो मुझे ऐसा लगता है मुझे बेनिफिट हुआ वो था कि आई वाज वर्किंग टू मच, सो आई वाज वर्कड अप ऑल द टाइम. तो मैं मतलब इवन व्हेन ही यूज्ड टू कम फॉर बारकोड शूट के लिए भी दैट वाज आल्सो लाइक मुझे अब इसके बाद कहीं और जाना है, मुझे 7 बजे तक पहुंचना है, ये वाला ख़त्म करो. ही इज ऑल द टाइम लाइक बिजी वर्किंग. तो आई थिंक बट इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. यू नो गॉट टू वर्क विद न्यू पीपल, गॉट टू डू समथिंग न्यू. और जब आपका काम यू नो ख़त्म हो जाता है, आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड बिकॉज जब आपको इतना मज़ा आता है काम करने में ना, तो आई थिंक वो दिखता है और वो आई एम श्योर दिखेगा. And how was your experience working with Karan? Is he a chocolate boy and a cute boy as we saying inside? सो बिफोर ये वेब सीरीज बाहर आती और जिसमें मैंने काम अभी किया है, करण को मैं पहले से जानती हूँ, लाइक 2 साल और पहले से जानती हूँ. वी भी करण को सब जानते हैं, कौन करण को नहीं जानता, बात ये है. करण सबका दोस्त है, बहुत दोस्त आदमी है. नहीं, जब हम दोनों एक जिम में भी वर्कआउट करते हैं और हम लोग फ्रेंड्स भी हैं. एंड जैसे जिस दिन मुझे पता चला कि आई एम कास्टेड फॉर मिनास, मुझे पहले से पता था कि करण विकी कर रहा है एंड अक्षय साहिल कर रहा है, और देयर इज़ वन अदर गर्ल सिमरन, शी इज़ प्लेइंग रिया. सो आई वॉज हैप्पी. यू नो एक और अच्छा लगता है जब आप अपने एक दोस्त के साथ काम करते हैं, एक कंफर्ट लेवल और हो जाता है. और हम दोनों का रिलेशनशिप जो दिखाया गया है, विच इज़ 5 साल का लिविंग रिलेशनशिप है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब विच इज़ वेरी नेचुरल जो होता है. तो सबसे मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था टू वर्क अराउंड एंड वर्क विद करण. सो दैट वाज रियली लाइक हेल्पफुल, बिकॉज ऐसे भी सीन्स हैं जो थोड़ा सा मैं आई थिंक अनकम्फर्टेबल होती करते हो, बट that was like the demand for the script, so I worked it out. So Karan, do you like to like night party and party animal? Are you party animal? यार मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पार्टीज़ नहीं की हैं, बट मैं ना आई थिंक अब मैं उस एज से निकल थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ कि मैं दैट आई नॉट कॉल माई सेल्फ अ पार्टी एनिमल, क्योंकि यू नो यूजली क्या होता है जब आप एक एज ब्रैकेट होता है आपकी लाइफ में जब आप सिर्फ पार्टीज़ करते हो, क्योंकि यू नो आपकी बॉडी भी गिव अप नहीं करती है. और आई थिंक इट्स ऑल्सो अ मेंटल थॉट प्रोसेस. आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल बट आई थिंक माई पार्टीज़ फ्रॉम क्लब्स हैव शिफ्टेड टू माई हाउस. तो मेरा जो घर है वो मेरे दोस्तों के लिए इट्स द प्लेस टू बी. आई कॉल इट देयर यू नो देयर सेफ जोन, देयर सेफ हाउस. तो हमारी अब पार्टीज़ आर नॉट अबाउट mad music, it's about good conversations. No, it's not about you know कि हम गाने मतलब ऐसा फुल यू नो फुल वॉल्यूम पे हाँ मतलब फुल वॉल्यूम पे मतलब ऐसा कोई गाने मेरे घर पे नहीं चलते हैं. नाउ इट्स मोर अबाउट लाइक यू नो म्यूजिक चलता है, बातें होती हैं, कभी हम फिल्म्स देख रहे होते हैं, कभी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं. सो आई थिंक नो लॉन्गर अ पार्टी एनिमल, आई होप सो. Very serious question to both of you. Karan, people are talking अपनी बात रख रहे हैं, like I'm talking about hashtag #MeToo. जी. What's your personal thought? Day by day, the cases coming in the Bollywood industry. What do you want to say to both of you? Yeah, I think Me Too. I really respect the entire aspect that people are actually finally coming out. This takes a lot of courage also to like come out suddenly, and this has been started. और अब I think धीरे-धीरे सब लोग बाहर आ रहे हैं. Like I'm giving full support to the people who are coming up with this, but and होना भी चाहिए यार. एक वर्क प्लेस कहीं भी हो, इट हैज़ टू बी वेरी मच सेफ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन टू लाइक वर्क. लाइक एक अपने एक माइंड सेट से बंदा आता है काम करने कि मुझे यहाँ काम करने आया तो सिर्फ काम होना चाहिए. आई डोंट थिंक ये सब चीज़ें बिल्कुल भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. And I think it's not just one fraternity. It's in each and every fraternity. It's just that हमारा entertainment field बहुत ज़्यादा आँखों में आता है. That's why the cases are more that we are seeing. But I completely support them, and I'm glad
that there are people who are coming out and are being strong enough. तो मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, especially people who rant a lot on the digital medium, कि अगर कोई इंसान guy or a girl has come out and said something and has either supported the thought or has said that it's happened to me, please don't troll that person. क्योंकि it's sad that half the time people don't come out because they are scared that something like this will happen. उनके साथ हुआ है, उसके बाद फिर से So even नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि हुआ है या नहीं हुआ है, that the judiciary will take decision. But if someone's trying to talk about something, let's not demean them in a certain way कि आप publicity के लिए ये कर रहे हो. Because let the judiciary take their entire decision and then we'll see what actually is. But I am glad that it's happening and I support them. I completely am with them. So you watching Big Boss? I don't watch it यार. मेरे से ना मतलब मैं बताता हूँ क्यों, मेरा प्रॉब्लम क्या है. I used to watch it a lot पहले. अब ना लाइफ में वैसे ही वक्त नहीं है इतना, और जो वक्त होता है ना मुझसे लड़ाइयाँ देखी नहीं जाती. मतलब I don't understand why people are fighting and I completely understand the thought कि what they are going through, we don't get it because they're in a house and frustrations are built up and we see the best 1 hour, we don't see the 23 hours. So that's why I don't watch it because मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अंदर, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट करता हूँ, बट आई थिंक परसेप्शंस बन जाती हैं. अगर आप कुछ देख लो ना तो आपको ऐसा लगता है यार ये ऐसा क्यों कर रहा है. So that's why I don't watch it. Thank you so much. Thank you. ये म्यूजिक बहुत आ रहा है. नहीं, वो दरवाजा बंद हो जाएगा और वो सीन वैसा है कि कब संजय ये भी 1 मिनट ऐसे चलेगा सीन वैसा. बोलिए. बहुत बहुत दोनों का स्वागत है आपका इस कन्वर्जेशन में. ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग लगा, तो किस तरह से शुरुआत इस बारकोड वेब सीरीज़ की आप दोनों से जानना चाहेंगे और कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है. ये जो माध्यम है वेब सीरीज़ का, ये प्लेटफॉर्म हर जगह पहुंचता है, तो इसकी रीच बहुत बढ़िया है. फिल्मों में अक्सर क्या होता है कि आपने बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई है लेकिन आपने उस ठीक तरह से मार्केटिंग नहीं की उसकी, और वीकेंड में इतना ही दिन मिलता है आपको पैसे कमाने के लिए, तो लोग आते नहीं हैं. यार गारंटीड आई बॉल्स हैं, बिकॉज अगर लोगों को पता चला कि ये शो अच्छा है, लाइक दैट फ्रॉम द ट्रेलर या मतलब वर्ड ऑफ माउथ से कि इट्स अ गुड शो, देखना चाहिए, इट्स देयर लाइफ लॉन्ग, आप कभी भी देख सकते हो. सो दैट्स द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस. How was the experience overall? I think overall the experience was fantastic and I think web series एक ऐसा जैसे मैंने बोला माध्यम है जहाँ ये बहुत ही अच्छा प्लस है कि there is no restriction in terms of seeing the film or the content for that time, but even I want to add to that is कि इसमें as an actor also आपको काफ़ी कुछ wider scope मिल जाता है, especially for someone like me, to showcase a talent and to come out as not just a pretty face but also someone who can be known as an actor. So अगर हम बारकोड की बात करें तो इसका जो रोल है वो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज वो मैं अगर ऐसी हूँ तो रिया बिल्कुल ऐसी है. So it was a complete opposite of me and मुझे ये रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया और उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी आई. सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. डू यू थिंक इंडिया एक ऐसी कंट्री है ट्रेडिशनल और कल्चरल वाली जहाँ हम जैसे वेब सीरीज़ की से मैं भी सवाल पूछना, न्यूडिटी की बात करें, इस तरह को न्यूडिटी दिखाना वेब सीरीज अनसेंसर तो होता ही है, कट नहीं होता, इस तरह दिखाना व्यूअर्स को डिसअपॉइंट करना, और क्या लगता है ओवरऑल ये सही है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ए कल्चरल इशू, इट्स एन एज अप्रोप्रिएट इशू, एंड आई थिंक दैट इज़ एन इंटरनेशनल मैंडेट कि हम एक उम्र लगाते हैं पिक्चरों पे या वेब सीरीज़ पे या कुछ भी, कि इस उम्र के लोग देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते हैं. दैट इज़ पोलिटिकली डिसाइडेड बाय अ गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड सेंसर बोर्ड. सो दैट इज़ नथिंग टू डू विद हमारी सभ्यता में ये लिखा है वो लिखा है. क्रिएटिव फ्रीडम है फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर अ डायरेक्टर, फॉर अ राइटर, और होना भी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उसको सेंसर करना चाहिए. एंड खास तौर पे इस माध्यम पर, बिकॉज ये माध्यम बना है इस कारण कि आप इसको आप नेट न्यूट्रलिटी को सेंसर नहीं कर सकते हो. सो ये मेरी पर्सनल राय है. आई एम श्योर अदर पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द मैटर, बट आई फील एज लॉन्ग एज आप एज अप्रोप्रिएट, जैसे हंगामा की जिम्मेदारी ये है कि आप लिखो उस पर कि कौन सा एज ग्रुप इसको देख सकता है, एंड एज लॉन्ग एज दैट इज़ हैपनिंग देन दे आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल.
तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आर्टिस्ट डिजर्व अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। और अगर आपको अपनी स्टोरी बताने के लिए न्यूडिटी दिखानी है, ड्रग यूज़ दिखाना है, तो ये सभ्यता के साथ क्या लेना देना है। हम पिक्चरें ये नहीं सोच के बनाते कि सभ्यता के खिलाफ है या नहीं है, हम फिल्में बनाते हैं स्टोरीज जो ह्यूमन काइंड स्टोरीज हैं। सो आई डोंट अग्री विद दैट। जो एक रियल लाइफ सिनेरियो है बेसिकली वो दिखाते हैं एंड आई कंप्लीटली अग्री विद हिम कि आई थिंक इट इज समथिंग कि इट्स वेरी एज अप्रोप्रिएट। वन ऑफ योर फेवरेट वेब सीरीज रिसेंटली यू हैव सीन? यार मुझे सीक्रेट गेम्स काफ़ी अच्छी लगी। मुझे इनसाइड एज भी बहुत अच्छी है। इनसाइड एज भी अच्छी। फिर एक टीवीएफ की थी परमानेंट रूममेट। परमानेंट रूममेट भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया थी। वेरी गुड। एंड इट्स स्टिल अ नेसेंट थिंग, मतलब इसकी शुरुआत हो रही है इंडिया में अभी। फॉरेन में, अमेरिका में, लंदन में, यूके में वगैरह ये 20 साल से चीज़ें चल रही हैं। तो वी आर एट द राइट टाइम बिकॉज आप देखो यार, मेरी 4-5 ऐसी फिल्में हैं जो किसी ने थिएटर में नहीं देखी है बट लोगों ने मोबाइल पे देखा है। तो अगर मैं किसी के ऊबर में बैठूंगा तो बोलेगा सर आपकी पिज़्ज़ा देखी थी मैंने। कहाँ देखी आपने? मोबाइल पे देखा मैंने। लाल रंग देखी या काला गंडी जो भी। तो इसका क्या मतलब है कि आज के डेट में लोग इंडिया में बैठ करके मोबाइल जियो के कारण या वोडाफोन के कारण देख रहे हैं मोबाइल पे। तो मुझे लगता है भविष्य यही है। सो इट्स एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। Films I think will eventually become more of an experiential thing, Cinematic experience, a cinematic experience, big screen. But then I think content right now सबसे ज़्यादा consume आपके मोबाइल पे ही हो रहा है। अब 24/7 आप फ़ोन पे हो, जो भी देख रहे हो मैं खुद ही करता हूँ यार। मैं फिल्में कम देखता हूँ और यूट्यूब पे कुछ चल रहा है तो वो देख लिया मैंने। It's very common. एंड इट्स ग्रेट बिकॉज यू कैन एंगेज फॉर हाउएवर लॉन्ग यू वांट। अगर आपने वेब सीरीज स्टार्ट किया और आपको एक एपिसोड देख रहे हैं या 2 एपिसोड देखने हैं, बाद में बाकी का देखना है या नहीं देखना है, तो आपके हाथ में। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग। वेब सीरीज़ की बात करें, व्यूअर्स का ये भी कहना है कि जब वेब सीरीज़ देखते हैं तो लाइक सेकेंड रो में जो एड्स आते हैं वो बाद में एड्स आना वो भी कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर निर्भर करता है। लाइक ओल्ड बालाजी, वूट, हंगामा, नेटफ्लिक्स, ये आपको एड्स नहीं दिखाते। अमेजोन नहीं दिखाता क्योंकि आप सब्सक्राइब कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स। तो फॉर दैट यू कैन नॉट हैव एडवर्टाइजिंग। यूट्यूब येस, बट यूट्यूब आप फ्री में देख रहे हो तो ये इसके ट्रेड ऑफ्स हैं। तो एज अ कंज्यूमर यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या पसंद है, कि आप एड्स देख लोगे या आप नहीं पसंद करते हो तो आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे। बहुत ही सीरियस सवाल है आप दोनों से। व्हाट डू यू से अबाउट द ट्रेंड व्हाट इज गोइंग ऑन #MeToo? लोग बात कर रहे हैं कि अपनी राय रख रहे हैं, अपने जो केसेस का हम देख रहे हैं बॉलीवुड में जो उठते आ रहे हैं डे बाय डे। क्या कहना चाहिए आप दोनों से? आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज हैपनिंग पर्सनली बिकॉज मुझे लगता है कि दिस इज द इंडिया आई वांट टू लिव इन। जो सेक्शन 377 के बाद जो चेंजेस आए हैं और मुझे लगता है अभी औरत भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड सेफ फील करेंगे इसके बाद। ऑफ कोर्स यू हैव टू डिसाइड कि नॉट एवरीथिंग इज़ मीटू। मतलब आप हर एक चीज़ को मीटू के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। कभी कभार रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि किसी का वो हुआ है या बलात्कार हुआ है। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट देयर इज़ अ स्टैंड पीपल आर टेकिंग एंड इसकी चर्चा हो रही है और ये बंद कमरों में बातें नहीं चल रही एनी मोर। And I mean, it's a great time to live in India. And also I feel this Me Too movement is not just restricted to women, it's also for men. It is for everyone. It's not based on gender. किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो गलत है, और अगर हुआ है and अगर कोई बाहर आकर उसके बारे में बात कर रहा है and genuinely अगर ऐसा हुआ है, then I think it takes a lot of courage and a lot of guts to do it, and hats off कि वो ये कर रहे हैं और एक movement है, and I think it's really good. Thank you so much for talking about Thank you. Thank you.